Hello friends, welcome to our YouTube channel SLP Sanjay Kumar Voice Therapist. And today we are live, and today we are before treatment live, and today date is 26 January 2024. So today is the Republic Day also, so many congratulations for the Republic Day to all of you. Or my name is Sanjay Kumar. By profession I'm a speech language pathologist and audiologist, and my area of interest is treating voice disorder. And in this live, the topic what we are going to cover, I'm just going to explain one by one, and then I'll coming in more details. The first will be introduction about me, and then there will be introduction about our center, then our YouTube channel, and then you'll be listening the patient voice before treatment, having different voice disorder. And उसके पहले जो पेशेंट्स हैं जो आए हैं डिफरेंट जगहों से, मैं उनको एक बार दिखा देना चाहता हूँ. ऐसे मैं कैमरा टर्न कर रहा हूँ एक बार. तो ये सारे पेशेंट्स हैं जिनकी वॉइस को आप लोग सुनेंगे ट्रीटमेंट से पहले कैसी है, और इनफैक्ट 8 दिन के बाद जब हम ट्रीटमेंट के बाद लाइव करेंगे तो आप पोस्ट ट्रीटमेंट भी इनकी वॉइस को सुन पाएंगे. तो मैं जस्ट दिखा रहा था उन सारे पेशेंट्स को. So next will be you will be listening patient voice before treatment, and then next will be what are the information required before starting the speech therapy. The speech therapy start करने से पहले किन बातों के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए. Then we'll be talking about kind of service we provide, and next will be high pitch voice sign symptom cause and treatment. Next will be vocal cord paralysis sign symptom cause and treatment. Then I'll be talking on is there any side effect of voice therapy or self treatment. Then we'll be talking on how to contact us. Do we have accommodation facilities at our center? Which treatment is preferred first, voice therapy or surgery for pitch correction? Then I'll be talking on do we have any branch of our center, cost and duration of treatment for voice and speech disorder. How do we treat international patient online or offline? Is saying 1, 2, 3 or saying in new voice is the stage of treatment or the end of the treatment? Is voice therapy result is permanent? Effect of food and drink on voice? And then will be announcement of next batch of group therapy that I'm doing now only. Our next batch of group therapy is going to start on 5th February 2024. Then I'll be talking on who are the good candidate for voice therapy. Then will be is all high pitch voice or female voice is Puberphonia. Next will be online facilities for communication disorder at our center, and then I'll be giving few tips to keep your voice healthy. तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं. मेरा नाम संजय कुमार है. बाय प्रोफेशन में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, ऑडियोलॉजिस्ट भी हूँ, और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वॉइस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना. चूँकि मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं सुनाई की टेस्टिंग भी करता हूँ, सुनाई की मशीन भी हम लगाते हैं. एंड आई हैव स्टडीड फ्रॉम एम्स दिल्ली. आई डिड माई बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली. एम्स दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है स्पीच एंड हियरिंग साइंस में. एंड आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, एंड माई मास्टर डिग्री नेम इज मास्टर ऑफ साइंस इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी. And this is my small introduction, and then our center name is Sanjay Speech Hearing and Rehabilitation Center, and that is located in Bangalore. If you do the Google search, you can find the detailed location map also. And our YouTube channel name is SLP Sanjay Kumar Voice Therapist, that we started in the year 2010, and from then onward, with the patient success stories, we are creating hope across the globe. Means after treatment, before treatment, we are showing the changes and giving hope to the people having different voice disorder across the globe. I'll be showing this is my YouTube channel. Those who are new for at our channel, this you can see that. And once you will see this channel, you will find from the year 2020, from the year 2010, different voice disorders videos. So this is our YouTube channel, and must explore the playlist to understand our work. And next is you will be listening patient's voice before treatment. So I'll be calling one by one to this patient and just turning the camera. Actual number of patients are more, but few patients are not comfortable with the video, so I'll be not be able to show them. But these are the patient whose video voice you will be listening in this during this live. Okay, तो actual number of patients इससे कहीं ज़्यादा है, और बाकी सारे लोग जो है जो इस वीडियो में नहीं दिख पाएंगे वो वीडियो के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती सबको लाइव में या वीडियो में नहीं दिखाते हैं. कई बार पेशेंट पूछते हैं सर आपसे ट्रीटमेंट लेना तो वीडियो पक्का देना ही पड़ेगा, तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है. तो अब मैं बुलाना चाहूँगा एक एक करके, और पहले पेशेंट हमारे हैं जर्मनजीत सिंह. जर्मनजीत सिंह आ जाइए, कुर्सी ले लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, पेपर को उधर ही रख दीजिए.
तो जर्मनजीत सिंह, हम लोग लाइव हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। किसी को अगर मैं माइक नहीं दिया तो याद दिला दीजिएगा देने के लगाने के लिए। तो बताइए क्यों आए हैं यहाँ पे? ट्रीटमेंट से पहले हम लोग लाइव हैं। माय नेम इज़ जर्मनजीत सिंह, आई एम फ्रॉम पंजाब और मुझे हाई पिच पास का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पे आया। सो एट विच प्लेस यू स्टे इन पंजाब? अमृतसर। टेल योर हॉबीज। ड्राइविंग। तो व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग बिकॉज ऑफ द वॉइस प्रॉब्लम? क्या चैलेंज फेस करते हैं? मुझे बोलने में बहुत दिक्कत आती है, जैसे? किसी का आवाज़ लगाना तो आवाज़ निकलता नहीं अच्छे से। कहने का मतलब आपकी वॉइस एनफ लाउडर नहीं, और फ़ोन पे हाँ। बात करते हैं तो क्या होता है? तो बहुत धीमा आता है आवाज़, उसमें भी ठीक ऐसे। है, कोई मैडम भी बोल देते हैं समटाइम। sometime. Okay, we'll do the needful, and next I'll be calling Shreya. ओके। Shreya, just tell us from which place you came, why you came here. We are live before treatment today. I came from Whitefield, Bangalore, and my name is Shrey Baderia. I'm 29 years old and I have high pitch volume issue. High pitch voice issue. Voice issue, yeah. Mm-hmm. How it's affecting your career and your job in day-to-day life? Like I work in IT and I interact with a lot of people, so like it affects my confidence overall. Yeah. Okay, we'll do the needful, and after 8 days we'll be doing post-treatment live. So those who are watching this live, don't forget to watch the post-treatment live that we are going to do after 8 days. Yeah, thank you. Okay. Yeah, so I think you have some work, so you can leave and I'll be tomorrow, and I'll be calling next patient. So sorry for this technical issue. So next patient is Ritik, ना? श्रेय का हो गया ना, 2 लोगों का हो गया। हाँ, तो ऋतिक का है थर्ड में। So Ritik, we are live. Make your mobile silent mode, everyone. So we are live before treatment. So from which place you came? Why you came? We are live at our channel. So, hello, my name is Ritik. I belong to Nagpur. I have high pitch voice problem. So how it's affecting your day-to-day life communication? When I call somebody, they call me ma'am. Like that, I'm facing this problem. I lost confidence. What is your mother tongue? Mother tongue is Hindi. Hindi. You speak Marathi also? No. Okay, no problem. Fine. So I'll be calling after you, Ritik. Shashank Singh is the next patient. Yeah. थोड़ा सा आ गया जी. Yes, Shashank. Tell us why you came, from which place you came, and we are live before treatment. Yeah, so my name is Shashank Singh. I'm from Gurgaon. So I also have the same problem of high pitch voice. I work in IT field. I have to interact daily with people. So this affects my confidence a lot. And especially when I interact with new people, so I get certain reactions for them. So it hits my confidence. So that is the reason why I am here. Okay. Yeah. We'll do the needful, and in fact after 8 days we are going to do the post-treatment live. So those who are watching this live, don't forget to watch the post-treatment live. Thank you. Thank you. Next is your name is Shashank. Yes. Shashank Singh. So next is Angad Singh. So Angad, tell us why you came here, and we are live before treatment. एक्चुअली मुझे हाई वॉइस की प्रॉब्लम है. मैं कहीं हाई पे पिच वॉइस. हाँ, हाई पिच वॉइस की. मैं कहीं ऐसे प्लेस पे होता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ है और मैं ऐसे ज़ोर से बोलने की कोशिश करता हूँ तो आवाज़ जैसे ज़ोर से आती नहीं है. और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ तो वॉइस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बट मैं जब वीडियोज़ बनाता हूँ तो ऐसे मुझे एक आधी कॉमेंट देखने को मिल जाते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि आपकी वॉइस थोड़ी सी शार्प है. तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि इन फ्यूचर काफ़ी मेरी हेल्प हो जाए इस चीज़ से. अच्छा, ठीक है. थैंक यू. अब कहाँ से हैं? मैं इंदौर से आया हूँ. इंदौर से बैंगलोर आए, हम पे भरोसा किया, और इनफैक्ट हम लोग 8 दिन के बाद लाइव करेंगे पोस्ट ट्रीटमेंट. तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पोस्ट ट्रीटमेंट लाइव देखना भूलिएगा नहीं, ठीक है. और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा, और अंगद के बाद है विष्णु. हाँ, वो पेपर नहीं चाहिए.
विष्णु क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बताइए। Myself Vishnu Prajapati. I am from Ahmedabad, Gujarat. I have complaint of like high pitched voice. So during communication with people, like people make fun for me, and I'll be hesitate during the communication. Okay, we'll do the needful. Thanks for coming from Gujarat, Ahmedabad, and showing thanks. faithfulness. And next is I'll be calling yours, Vishnu. Vishnu, no? yes. So Abhinav, I'll be calling next. Yeah, please be seated. So we are live at our channel before treatment today. So tell us what exactly problem we are facing. So I Why- also face the problem of high pitched voice, and I have to lead large teams. So I think by correcting this, I will be able to lead more effectively. And I have come from Bangalore only. So how it is your voice problem? How it's affecting your career? So I think I'm in a leadership position, and I think whatever I say, it has to inspire the people. So with good pitch modulation, it will help me actually, and the team also. Okay, fine. Thank you. Thanks for coming and showing faithfulness. We'll do the needful. Yeah. And next is Abhinav. You are Abhinav. So next is Shamit. Yeah, Shamit, we are live before treatment today. And tell us what exactly problem you're facing in day-to-day life. Come little forward. So I am facing the similar issues. I have a high pitch voice issue, speech clarity, and the low intensity voice. Okay, so And some finding is in the ENT also. That ENT finding is inter-arytenoid pachydermia. okay, Yeah, go ahead. okay. So I stay in Bangalore, Marathalli, and I am working in Bangalore only. So why it is important for me is because I am leading a large team, and where I have to interact with a lot of people on daily basis. So obviously the thing which I say, it should be expressive and impressive in both the manner. And when my speech has high pitch and clarity is not there, it affects my confidence overall. So I'm just looking forward improving my voice quality. Thank you, Okay, sir. so this is little challenging, but we'll do the needful. Thanks Yeah. for coming and showing faithfulness. Okay. So I think we have done the live for those patients who has, for everyone is done now. Those who have given the permission for the video, but actual number of patients are quite more. I was not able to show the vocal cord paralysis patient. One lady is there. She's her video and many more. So now I'll be going to the next step one by one. So next is what are the information required before starting the speech therapy. तो स्पीच थेरेपी स्टार्ट करने से पहले किन बातों के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे सेंटर पे ऐसे भी लोग आते हैं जो पहले से ट्रीटमेंट लेके आते हैं, और जब मैं डिटेल में खंगालने की कोशिश करता हूँ तो पता लगता है या तो वो सेल्फ ट्रीटमेंट या फिर झोला छाप किस्म के लोगों से ट्रीटमेंट लेके अपने वॉइस वोकल कॉर्ड ख़राब कर चुके होते हैं। तो कई बार रॉन्ग वे ऑफ डूइंग वोकल एक्सरसाइज और रॉन्ग वोकल एक्सरसाइज में रिजल्ट इनटू द मसल टेंशन डिस्फोनिया, फोनेटरी गैप. Even we recently I have gone to through an article, this normal patient who is having the puberphonia, and if they will be doing wrong vocal exercise, that may result into the sulcus vocalis. The wrong way of vocal exercise may result into the sulcus vocalis. तो आप सोच सकते हैं that may be sometime congenital also. So और सल्कस वोकलिस के जो पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं उनमें मैंने बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं देखा है। तो कहने का मतलब अगर किसी को पुबरफोनिया है, पुबरफोनिया के ट्रीटमेंट कराने के लिए आ गया, वो सल्कस वोकलिस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो मैं अच्छे चेंजेस कर पाता हूँ। लेकिन वोकल एब्यूज़ के बाद अगर वो सल्कस वोकलिस में कन्वर्ट हो गया तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को देखेंगे सल्कस वोकलिस वाले को, तो बहुत ही अच्छे चेंजेस नहीं हैं। मैं वो भी सारे डाल देता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली होता क्या है ऐसे डिसऑर्डर के केस में। तो लेट्स तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें कुछ ऐसे जानकारी की ज़रूरत है कि हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये झोला छाप किस्म का व्यक्ति हो सकता है और ये एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, वॉइस थेरेपिस्ट है। तो हम लोग आते हैं इस बात पर कैसे पहचानेंगे एक आदमी। तो जिनसे भी आप ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, एक बात तो ज़रूर पता कीजिए कि वो किस कॉलेज से पढ़ाई किया है, उसके पास डिग्री क्या है, डिग्री का फुल फॉर्म क्या है, कौन से ईयर में डिग्री प्राप्त किया है। कई बार झोला छाप किस्म के लोग डिग्री और कॉलेज दोनों फेक लिख देंगे, लेकिन कौन से ईयर में डिग्री प्राप्त किया है ये बताने से हिचकेंगे। फिर वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, रजिस्टर्ड है तो उनका RCI CRR नंबर क्या है। और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि दूसरे प्रोफेशन के लोग
जो कि रिहैबिलिटेशन फील्ड में काम करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच एंड हियरिंग टेक्नीशियन, ईयर मोल्ड टेक्नीशियन, उनके पास RCI का नंबर होता है। तो आपको ये देखना है कि जब आप स्पीच थेरेपी, वॉइस थेरेपी लेने जा रहे हैं तो वो व्यक्ति एज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट RCI में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, मतलब जैसी सर्विस दे रहा है उस प्रोफेशनल के रूप में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो सिर्फ RCI CRR नंबर होना ही अपने आप में साबित नहीं करता है कि वो व्यक्ति स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, वॉइस थेरेपिस्ट है। तो मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लोगों के मन में ये भी आता होगा कि क्या सर का ये सारा इन्फॉर्मेशन क्या है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मेरी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। So just refer the description of this video. You will find all the detail about me, what I was talking, which college, which university, and RCI CRR number, all the details. And अब और भी एक तरीका है जो कि उसमें तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, अब वो बताने जा रहा हूँ। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाइए, मैं एक एक करके स्क्रीनशॉट लिया हूँ, मैं दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप या फिर गूगल सर्च में ढूंढिए, ऐसे करके गूगल सर्च में ढूंढिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। मैंने अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया है, तो आपको ऐसा कुछ आएगा। अगर आप रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया डालेंगे तो आपको क्या करना है, फिर अबाउट अस यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आप इस जगह पे पहुँचेंगे, ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। तो यहाँ पे 3 लाइनें दिखेंगी, यू विल फाइंड 3 लाइन्स, जस्ट क्लिक दिस 3 लाइन्स एंड देन you will be reaching at this place. So once you come down, you will find CRR registered here and then you can click. तो जैसा कि मैंने बताया था, जो भी प्रोफेशनल होते हैं उनके पास एक CRR नंबर होता है, CRR registered, you have to click and then you will be reaching at this place. So second line will be click to search by CRR number. The second line you can click, then you can go, you will be reaching here once you click. Next, then you can put the CRR number, search by CRR number, here it is written, so you have to type the CRR number. So even my CRR number is description of the video. So if somebody is telling I am a speech language pathologist, audiologist, speech therapist, so first thing you should get in your mind is what is the CRR number, if he has given or not. If he has not given or she has not given, दाल में काला हो सकता है। अगर दिया है तो क्रॉस चेक कीजिए, डालिए यहाँ पे, और जब डालेंगे तो व्हाट क्वालिफिकेशन इज हैविंग, बैचलर, मास्टर, ऑल द डिटेल्स विल बी कमिंग। तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में अगर बैचलर डिग्री है इस फील्ड में तो यू आर एलिजिबल फॉर प्रैक्टिस एज ए स्पीच पैथोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, बट USA में एटलीस्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर मास्टर वाले नहीं मिलते हैं तो बैचलर वाले के बारे में तो ज़रूर आपको खोज करनी ही चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, स्पीच थेरेपी या कम्युनिकेशन एक ब्रॉड फील्ड है। तो ऐसे आपको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट मिलेंगे जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज होगा, छोटे बच्चों पे वो काम कर रहे होंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जो डिस्फेजिया, स्वेलिंग डिसऑर्डर पे काम कर रहे होंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जो स्ट्रोक के बाद जो एफेजिया हो जाती है उस पर वो काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। अब हमारे जैसे लोग हैं जो कि वॉइस में काम करना पसंद करते हैं और मेरी एक्सपर्टीज़ वॉइस डिसऑर्डर में ज़्यादा है। तो अगर आप मान लीजिए XYZ स्पीच थेरेपिस्ट से, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लिया आप अपने शहर में और फ़ायदा नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल आपको पिच की प्रॉब्लम है और आपने ट्रीटमेंट लिया, फ़ायदा नहीं हुआ, तो इमीडिएटली इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है कि आप वॉइस थेरेपी के सुटेबल कैंडिडेट ही नहीं है, अब आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। हो सकता है जिनसे आपने ट्रीटमेंट लिया हो उनकी एक्सपर्टीज किसी दूसरे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में रही हो। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं USA से भी आते हैं, लंदन से भी आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि लंदन में कोई स्पीच थेरेपिस्ट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो फिर वहाँ पे ऑलरेडी ट्राई करके यहाँ आया और चेंजेस हो गए यहाँ पे। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है जिनसे उन्होंने ट्रीटमेंट लिया होगा स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट समझ करके, उनकी एक्सपर्टीज वॉइस डिसऑर्डर में ना होकर किसी और दूसरे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर या स्वेलिंग डिसऑर्डर में, डिस्फेजिया वगैरह में रही हो। तो मैसेज ये है, कंक्लूजन ये है कि आप अगर अपने शहर में वॉइस थेरेपी ट्राई करते हैं, अगर प्रोफेशनल से भी, छोला छाप से तो करना ही नहीं है, अगर प्रोफेशनल से भी ट्राई करते हैं, नहीं फ़ायदा हुआ, तो इमीडिएटली इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है कि आप वॉइस थेरेपी के लिए सुटेबल कैंडिडेट नहीं है और आपको अब थायरोप्लास्टी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा कि अगर आप थायरोप्लास्टी या सर्जरी करवाते भी हैं पिच के करेक्शन में, तो सर्जरी के बाद भी वॉइस थेरेपी लेनी ही पड़ती है, तो क्यों ना पहले वॉइस थेरेपी ट्राई किया जाए। तो ये एक मैसेज देना चाह रहा था पब्लिक अवेयरनेस के लिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसा कि हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली। तो इस बात पर हमने चर्चा की कि what are the information required before starting speech therapy, and next is kind of service we provide। तो हमारे सेंटर पे कौन से कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जिसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसको समझना बड़ा ही आसान है। मैं अपने YouTube चैनल की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। अगर आप जाएंगे YouTube चैनल की तरफ, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, सॉरी, तो आपको दिखेंगे प्लेलिस्ट,
ठीक है, अगर ये प्लेलिस्ट दिखेगा, अगर प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट वीडियोस मिलेंगे, डिफरेंट कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के प्लेलिस्ट मिलेंगे, तो आपको ये पता चेंज कितना हुआ इस XYZ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में। फिर ये पता लगेगा कि टाइम कितना लगेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले भी हम डेट बोलते हैं, ट्रीटमेंट के बाद भी डेट बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिलेंगी। लेकिन एक जानकारी के लिए बताता हूँ कि अगर आप प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिलेंगे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के, पियरफोनिया के, हाई पिच वॉइस, फोनेटरी गैप, सल्कस वोकलिस, मिस आर्टिकुलेशन, एफेजिया, हियरिंग टेस्टिंग के बाद ये सुनाई की मशीन हमने लगाई तो उनके कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गए पेशेंट के। तो ये सारे चीज़ों के आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नया हैं तो ये मैं बताना चाह रहा था। सॉरी, ये थोड़ा सा लूज हो गया है क्या? सॉरी। तो ये मैं अवेयरनेस के लिए बताना चाह रहा था और हम आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी सर्विसेज को समझना अगर चाह रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए आपको। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विस वी प्रोवाइड, प्लीज़ रेफर द प्लेलिस्ट ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। एंड नेक्स्ट इज हाई पिच वॉइस, साइंस सिम्टम कॉज एंड ट्रीटमेंट, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, साइंस सिम्टम कॉज एंड ट्रीटमेंट। And so before discussing this topic, let's first understand the normal speech production mechanism. So once we'll understand the normal speech production, it will be easier for us to understand the abnormal. तो normal speech production के लिए पहला जो स्टेज है वो क्या है? थॉट्स। थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, फिर हम सांस लेते हैं, हवा लंग्स में जाती है। जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो हवा का प्रेशर वोकल कॉर्ड्स के नीचे लगाते हैं। यहाँ पे लैरिंग्स है, लैरिंग्स के अंदर में दो स्ट्रिंग की तरह के स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। सो वंस यू पुट एयर प्रेशर बिलो द वोकल कॉर्ड स्टार्ट मूविंग लाइक ए स्ट्रिंग ऑफ ए वायलिन एंड गिटार एंड साउंड्स जनरेट। देन वी मॉडिफाई दैट साउंड इनटू डिफरेंट साउंड विद द हेल्प ऑफ आवर लिप्स, टंग, जॉ, टीथ, पैलेट. For example, if you want to say p, both the lips are coming closer together and touching each other. When you want to say t, tongue is coming between the teeth. When you want to say k, back of the tongue is getting elevated and touching the soft palate. So it means each and every sound has own place, own manner of articulation. If place of articulation, manner of articulation will be wrong, there will be pronunciation problem. So when we say a one sentence, so many things happen at a time. Thoughts come, we take breath, we put air pressure below the vocal cord moves, sounds generate, we modify that sound into different sound. In one sentence there are so many words, in each word there are so many sound, each sound's own place, own manner of articulation. It's quite complex process. In this process there are hundreds of our body muscles works in a very, very coordinated way. If coordination among these muscles will not be there, there will be fluency problem. That can be seen in case of stammering. And if there will be something wrong in the place of articulation and manner of articulation, there will be pronunciation problem. आपने देखा होगा कुछ बच्चे बोलते हैं कैट को टैट बोलते हैं, राम को लाम बोलते हैं, कबूतर को कबूतर बोलते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि if place of articulation, manner of articulation is wrong. So depending upon the problem, we correct the speech. And let's talk about the first was pitch, high pitch voice. The first let's understand the high pitch voice sign and symptoms. सो हाई पिच वॉइस का साइन सिम्टम्स समझना बड़ा ही आसान है। अभी एटलीस्ट आज के डेट में लोग फ़ोन यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, लगभग सब लोग यूज़ करते हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं। सो इफ़ योर एज इज़ इफ़ ए बॉय हुज एज इज़ मोर देन द प्यूबर्टल एज और नियर प्यूबर्टल एज लाइक 13-14 ईयर्स का हो गया, एंड व्हेन ही इज़ कॉलिंग ऑन द फोन समबडी इज टेलिंग इट्स यस मैम टेल मी, और कुछ खाना मंगाता है, कुछ कैब बुक करता है ऑनलाइन, तो उधर से सामने वाले सोचते हैं कोई लड़की बोल रही है या कोई फीमेल बोल रही है। तो ऐसे केसेस में ये सिम्टम्स हो सकता है कि उसकी वॉइस पतली है। एक ये हो गया। एंड कॉज वाई द पिच इज हायर इन केस ऑफ द बॉयज इवन आफ्टर प्यूबर्टी और ड्यूरिंग प्यूबर्टी. So as I told during like here we have larynx, inside the larynx we have two string like structures known as vocal cord. So during puberty, mass of the vocal cord, length of the vocal cord increases in case of boys due to a hormone called testosterone. So if mass will increase, length will increase, then pitch reduces. कहने का मतलब प्यूबर्टी से पहले वोकल कॉर्ड एक पतली स्ट्रिंग की तरह की स्ट्रक्चर होती है। प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से वो एक मोटी स्ट्रिंग की तरह की स्ट्रक्चर हो जाती है। तो जब आपने गिटार देखा होगा तो क्या देखा है गिटार में? पतली तार पतली आवाज़ प्रोड्यूस करती है,
गिटार की जो पतली तारें, गिटार की जो पतली स्ट्रिंग होती है पतली तार प्रोड्यूस करती है, और गिटार की जो मोटी तार होती है वो मोटी आवाज़ प्रोड्यूस करती है। प्यूबर्टी से पहले लड़कों के केस में वोकल कॉर्ड कैसी स्ट्रक्चर होती है? पतली होती है ना, पतली तार की तरह। और प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से क्या हो गया? मोटी तार बन गई। अब मोटी तार बन गई तो आवाज़ कैसी आनी चाहिए? मोटी आइडियली। लेकिन उस बच्चे ने बचपन से लेकर प्यूबर्टी तक कैसी आवाज़ में बात किया? पतली आवाज़ में। लेकिन प्यूबर्टी के दौरान आवाज़ की तारें मोटी हो गई है, अब एक मोटी आवाज़ प्रोड्यूस करने में सक्षम है वोकल कॉर्ड। लेकिन इतने सालों की आदतों की वजह से वो क्या होता है कि वो नई आवाज़ पे स्विच नहीं हो पाता है। तो जब वो नई आवाज़ पे स्विच नहीं हो पाता है, कहने का मतलब वो अपनी पुरानी ही आवाज़ को कर सकते हैं, थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल रीजन मेंटेन करना चाहता है। लेकिन वोकल कॉर्ड तो मोटी हो गई है, अगर वोकल कॉर्ड को ठीक से पूरी तरह से वाइब्रेट कराएगा तो आवाज़ कैसी आने लगेगी? मोटी। लेकिन उसको क्या करना है? पुरानी आदतों की वजह से पुरानी आवाज़ निकालनी है, तो उसके लिए वो क्या करना शुरू कर देता है? पूरे वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट ना करा करके उसके थिन एजेस को वाइब्रेट कराना शुरू कर देता है। तो एक्चुअली द वोकल कॉर्ड इज ए थिक स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार लाइक ए स्ट्रक्चर एट दिस मोमेंट, बट इट्स बिहेविंग लाइक ए थिन स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार लाइक ए स्ट्रक्चर। और जब गिटार स्ट्रिंग थिन होगा तो आवाज़ कैसी आएगी? पतली आएगी। So what I do as a speech language pathologist in voice therapy, I just stimulate the whole mass and the whole length of the vocal cord. So कहने के मतलब ट्रीटमेंट से पहले थिन एजेस वाइब्रेट कर रही थी, अब ट्रीटमेंट के बाद पूरे वोकल कॉर्ड की मास लेंथ वाइब्रेट करने लगती हैं। तो जो वोकल कॉर्ड एक पतली तार की तरह बिहेव कर रहा था वो एक मोटी तार की तरह बिहेव करने लगता है, तो आवाज़ मोटी हो जाती है वॉइस थेरेपी के बाद। इसको थोड़ा सा अगर फिजिक्स एकॉस्टिक्स का नॉलेज है तो इससे भी आपको रिलेट करते हैं। एक फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है एकॉस्टिक्स में, n = 1/2L/T/m, where n is the frequency of a vibrating string, L is the length of the vibrating string, T is the tension of the string, and m is the mass per unit length. Okay, so before puberty the vocal cord mass and length will be less, the n will be higher, the frequency will be higher. But during puberty, because of the testosterone hormone impact, mass will be more, length will be more, then pitch will reduce. And those who are having the puberphonia, like high pitch voice male, instead of vibrating whole mass and the whole length of the vocal cord, they are vibrating thin edges of the vocal cord. So thin edges vibrating, they are vibrating. It means vibrating mass is less, vibrating length is less, even not whole length of the vocal cord. But once we give the voice therapy, we'll stimulate the whole mass and the whole length of the vocal cord. Though vibrating mass will increase, vibrating length will increase, then pitch will reduce. So if a adult male is there and his pitch should be ideally between 100 Hz to 150 Hz. So those will be high pitch voice, their pitch will be more than that. Okay. कुछ पेशेंट जो आज के ही ग्रुप में आए हैं, कुछ का 160 Hz है, किसी का 190 Hz है. So it's different patient have a different pitch. हाँ, तो ये हम वॉइस थेरेपी में क्या करते हैं? होल मास, होल लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड विल स्टिमुलेट, देन द पिच रिड्यूसेस. सो दिस इज सो सिंपल बायोफिजिक्स इज. But sometime due to the vocal abuse, we can say vocal abuse means during puberty the vocal cord mass length got increased, it is ready to produce the low pitch voice, but you are producing high pitched voice. So it is equivalent to a vocal abuse, and long term vocal abuse impact can create the phonatory gap, muscle tension dysphonia, and sulcus vocalis. Sulcus vocalis sometime it may be congenital, but sometime it may be the result of the vocal abuse. So जो नॉर्मल वोकल कॉर्ड्स वाले पेशेंट आते हैं, जो वोकल एब्यूज़, कई बार ये भी होता है कि इवन दो ड्यूरिंग प्यूबर्टी दे हैव डेवलप्ड द प्यूबरफोनिया, दे हैव नॉट बीन ट्रीटेड, बट स्टिल देयर इज द वोकल कॉर्ड हैज नॉट बीन डैमेज. सो इन दैट केस द वॉइस चेंज विल बी क्वाइट इम्प्रेसिव. But sometime untreated puberphonia may result into the long-term impact of the vocal abuse may result into the sulcus vocalis or phonatory gap. So in that case, sometime it's become challenging to treat. So my suggestion is that if you know that you are having a puberphonia and earlier age, suppose if you are 13, 14 year age or 15, 16 year, then immediately you know that, try to take the treatment. Because if you're waiting long years, so maybe it may result into the muscle tension dysphonia, phonatory gap and sulcus vocalis, and that time it may be challenging. But not all the patient. इसका simple example देता हूँ कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, सबको पता है. लेकिन मैं अपने गांव के ऐसे लोगों को जानता हूँ कि 100 इयर्स से ज़्यादा उम्र थी और वो लोग बीड़ी पीते थे. तो कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो सारे वोकल एब्यूज़ वाले पेशेंट हैं सबको वोकल नोड्यूल हो जाए, सबको मसल टेंशन डिस्फोनिया हो जाए, सबको फोनेटरी गैप हो जाए, सबको सल्कस वोकलिस हो जाए. लेकिन होने का डर तो रहता है ना.
तो क्यों ना ट्रीटमेंट सही जगह पे, सही वक्त पे, सही तरीके से ले लिया जाए। तो हम बात कर रहे थे हाई पिच वॉइस, साइन, सिम्टम, कॉज एंड ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में भी समझ में आ गया कि बेसिकली विल बी स्टिमुलेटिंग होल मास एंड द होल लेंथ। और हाई पिच वॉइस एक सिम्टम है, ठीक है। हाई पिच वॉइस जैसे कि मैंने बताया सल्कस वोकलिस में भी हो सकता है, फोनेटरी गैप में भी हो सकता है, मसल टेंशन डिस्फोनिया, बट जो टिपिकल पुबरफोनिया वैसे भी केसेस में हो सकता है। तो कारण समझ के उसका ट्रीटमेंट होता है। और रेयर केस में, हालांकि मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा लेकिन अभी वैसे पेशेंट से मिला नहीं हो अपनी लाइफ में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से भी हाई पिच वॉइस हो सकते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है लेकिन आज तक मिला नहीं हूँ। मैं 2010 से यहाँ पे वॉइस थेरेपी दे रहा हूँ, कितने साल हो गए, इतने साल में एक भी ऐसे पेशेंट से नहीं मिला हूँ हार्मोनल इश्यू वाले, लेकिन मेरे टेक्स्ट बुक में है। तो ये हो गया हाई पिच वॉइस, साइन, सिम्टम, कॉज एंड ट्रीटमेंट। एंड नेक्स्ट इज वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, साइन, सिम्टम, कॉज एंड ट्रीटमेंट। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे लैरिंग्स है एंड हियर वी हैव द लैरिंग्स, इनसाइड द लैरिंग्स वी हैव टू स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज वोकल कॉर्ड्स. So the vocal cord is a kind of muscles, and that muscle, vocal cord, is getting supplied by a nerve, technically we call recurrent laryngeal nerve. That is a branch of vagus nerve, 10th cranial nerve. So what happened during the thyroidectomy, or maybe due to trauma, due to some infection, the nerve get damaged, and the nerve impulses will not be transmitting to the vocal cord, and there will be vocal cord paralysis. That may be unilateral vocal cord paralysis if one side of the vocal cord is getting movement is getting affected due to the paralysis in that nerve, or sometime both. So in that case we call bilateral vocal cord paralysis. The reason can be bacterial infection, viral infection, trauma during thyroidectomy, or sometime idiopathic. We don't know why it happened. So what we do in the vocal cord paralysis treatment, once suppose the one vocal cord is paralyzed, left vocal cord is supposed paralyzed. So when we speak, say or anything, both the vocal cord will be coming closer together, and there will be very small gap between the vocal cord. Suppose left vocal cord is paralyzed. So what will happen? Right will come, but left will not come. So there will be gap. Technically we call phonatory gap will generate, and because of that, a lot of air will escape, and the amplitude of vibration of the vocal cord will reduce. The patient will be having the loudness issue, loudness will be less, breathiness will be there because air is escaping, and so the voice quality will be getting affected, and sometimes it happens to both the vocal cord. So during therapy what we try to do, we try to bring the vocal cord closer together to reduce the phonatory gap, or we try to stimulate the paralyzed vocal cord to move. So anything can happen. Sometimes I have seen that after voice therapy the paralyzed vocal cord start moving, and sometime I have seen that suppose if the left vocal cord is paralyzed, after therapy left is not started moving, but right will come more towards, we bring right vocal cord more towards the left one, so we can reduce the phonatory gap. So in this way we can work on the voice therapy, especially during the vocal cord paralysis. And next is there any side effect of voice therapy or self-treatment? So my answer is, if you are taking voice therapy from a certified professional who are expert in treating voice disorder, there is no side effect. But when you are taking self-treatment or treatment from the healthcare quacks, voice or vocal cord may damage sometime. Next is how to contact us. To contact us, just refer the description of this video, and you will find our website. Click on that, and once you click the reach me, you will find the like where is our center located on the Google map. So, and even you will find our contact number. So in that way you can contact us. Next is, do we have accommodation facilities at our center? Our center is a clinic, or we can say that and name is Sanjay Speech Hearing and Rehabilitation Center. So it's not a hospital, so we don't have accommodation facilities inside our center, but our team will be guiding you to get the paying guest hotel near to this clinic or near to this center. And which treatment is preferred first, voice therapy or surgery for pitch correction? The answer is, you should try first voice therapy, because after the surgery you have to take the voice therapy. Then why you should not first try voice therapy? Do we have any branch of our centers? So we don't have any branch till now of our center. Our center is only one, and that is located in Bangalore. And if you do the Google search writing Sanjay Speech Hearing and Rehabilitation Center Bangalore, you can easily reach to us. And cost and duration of treatment for voice and speech disorders, so that varies. So we suggest those who have this kind of question, please call us. We'll do the perceptual evaluation. Sometimes we suggest some tests, especially the laryngoscopy or a stroboscopy, and then we'll be able to comment like a cost and duration of treatment. And sometime after listening, after doing the perceptual evaluation only, we can give some ideas. And
how do we treat international patient, online or offline? So our international patients are in both modes. So for that also we do first perceptual evaluation, and then we decide in what mode we can start the treatment. And next is saying 1, 2, 3 or saying in new voices the stage of treatment or end of the treatment. I have seen in social media many times there are some videos the patient is saying in high pitch voice, next is telling in the low pitch voice, and the person who has uploaded the video is showing the change. So I can say this is a stage of treatment, but it's not an end of the treatment. End of the treatment means patient should able to talk like at conversation stage. Even I have seen sometimes some videos, patient is saying 1 in high pitch voice, next is saying 1 in the low pitch voice. So this is a word level. So that can be also a stage of treatment, not the end of treatment. End of treatment का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस में, लाइव कॉन्वर्सेशन में उसके चेंज दिखने चाहिए. तो मुझे लगता है कि ऐसे वीडियो डालने की जल्दीबाजी क्यों है, कॉन्वर्सेशन पे होना चाहिए. कहने का मतलब कि अगर आपको दिल्ली जाना है, कोई गाजियाबाद में पहुंचा दिया, कहा कि मैंने काम कर दिया, तो ऐसा नहीं है. आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली तक पहुंचने की बात करनी चाहिए, और ऐसे लोगों से इम्प्रेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ गाजियाबाद तक का रास्ता उसको मालूम है, लेकिन गाजियाबाद से दिल्ली कैसे जाएंगे उसके रास्ता मालूम नहीं है, तो वो गाजियाबाद तक कहीं दिखाएगा. ठीक है. फिर है इज़ वॉइस थेरेपी रिजल्ट इज़ परमानेंट. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आते हैं. तो मैं बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि 2 ऐसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हैं जिसका ट्रीटमेंट के बाद हमने अपने सेंटर पे रिलैप्स देखा है. वो है, पहला है स्पास्मोडिक डिस्फोनिया. कई बार, सारे केसेस में नहीं, कुछ केसेस में रिलैप्स देखा है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया तो उसकी वॉइस में इंप्रूवमेंट हो गया, लेकिन बाद में घर जाके रिलैप्स हो गई. वो है एक स्पास्मोडिक डिस्फोनिया, और दूसरा है स्टैमरिंग. सो इन दोनों कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में कभी कभी रिलैप्स होते हुए हमने देखा है. लेकिन वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के केस में, पिच लाउडनेस के केस में, जो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार हमने अगर थेरेपी दिया और वॉइस इंप्रूव हो गया तो वो स्टेबल रहती है. और इस चीज़ का आंसर करने के लिए कोविड पैंडेमिक के टाइम में मैं भी फ्री था, हमारे पेशेंट भी फ्री थे. तो ऐसे पेशेंट जिनका हमने 6 साल पहले, 7 साल पहले ट्रीटमेंट किया, उनके साथ मैंने लाइव हुआ, और उनका भी यही जो भी फीडबैक है, मैं बताऊंगा नहीं क्या उन्होंने बताया था. मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि रिलैप्स होता है कि नहीं, मैं अपने यूट्यूब चैनल में एक सजेस्ट करता हूँ कि 35 मिनट्स का वीडियो देखिए. उस 35 मिनट्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वो सारे लिंक दिए हुए हैं जिनका मतलब 6 साल 7 साल पहले ट्रीटमेंट किया और आज की डेट में उनकी वॉइस कैसी है और उनके फीडबैक कैसे हैं. हालांकि एक बार मैं दिखा ही देता हूँ, लोगों को क्यूरियोसिटी होगी वो कौन सा वाला वीडियो है. आप शायद होम पेज पे देख पा रहे हैं ना, ये वाला, तो ये वाला ही है. इसी के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे ना तो आपको वो मिल जाएगा. 35 मिनट्स का ये वाला वीडियो है. ठीक है. तो उनके साथ हमने लाइव किया था, और पेशेंट्स क्या बोल रहे हैं कि 7 साल पुरने के बाद भी उनकी वॉइस कैसी है, वो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. लेकिन रिलैप्स के बारे में मैंने बताया. हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं फिर ऐड करना चाहूँगा कि हेल्थ साइंस इज़ नॉट मैथमेटिक्स. इट्स नॉट ऑलवेज 2 + 2 = 4. कभी कभी एक्सेप्शनल केस आ सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट इज़ इफेक्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक ऑन वॉइस. तो हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसका इम्पैक्ट वॉइस पे तो पड़ता ही है. इफ़ यू आर ड्रिंकिंग वेरी कोल्ड थिंग, so vocal cord is a muscle, or very hot, so that will be creating impact on the vocal cord and voice. So those who are professional user, especially we say that don't take very cold or very hot thing. और अगर आप खा करके तुरंत सो जाते हैं, आफ्टर द डिनर वी आर गोइंग टू इमीडिएटली स्लीप ऑन, देन व्हाट विल हैपन, द एसिड विच विल फॉर्म टू डाइजेशन फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड, दैट विल एक्यूमुलेट एट द लेवल ऑफ द थ्रोट, एंड दैट may damage the voice and the vocal cord. So my suggestion is always keep some gap from 1.5 hours to 2 hours in between your dinner time and the sleeping time. And next announcement of next batch, or if you take so much food, those who are very spicy and all, that may also create acidity, and due to the GRD, voice or vocal cord may damage. And next is announcement of next batch of group therapy. So our next batch of group therapy is going to start on 5th February 2024. अगला हमारा जो बैच है ग्रुप थेरेपी का 5 फरवरी 2024 को स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट इज हु आर द गुड कैंडिडेट फॉर वॉइस थेरेपी. दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Before joining our center, if you think it will be wastage of time and money, then you are absolutely correct, and you are thinking correct. And if you are thinking after coming to our center you will get some
good change in your voice or there will be some improvement, then also you are right. So this is my message for those who are planning to come to our center. And is all high pitch voice or female voice is puberphonia? So no, all high pitch voice is not puberphonia. Puberphonia means high pitch voice is a kind of symptom. Like अगर किसी को बुखार है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो बुखार के कई सारे कारण हो सकते हैं ना, तो उसी तरह हमारे फील्ड में भी यही होता है कि हाई पिच वॉइस एक सिम्टम है, वो डिपेंड करता है किस तरह की वॉइस की प्रॉब्लम है. मसल टेंशन डिस्फोनिया में भी हाई पिच होगा, सल्कस वोकलिस में भी होगा, फोनेटरी गैप में भी होगा, नॉर्मल वोकल कॉर्ड है उसमें भी होगा, तो कारण समझ के ट्रीटमेंट करना होता है. एंड नेक्स्ट इज ऑनलाइन फैसिलिटीज फॉर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एट आवर सेंटर. सो दैट also once we do the perceptual evaluation, or sometimes we need some test called stroboscopy or laryngoscopy. After that we decide who can be a online candidate for the voice therapy at our center. And now it's the most interesting and most important for everyone, those who are having voice problem and those who are not having the voice problem. I'm going to talk. I'm going to give tips to keep your voice healthy, so please be connected. तो अपनी वॉइस को अच्छा रखने के लिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. वाटर इज़ ए वेरी गुड लुब्रिकेंट. तो मैं भी पी लेता हूँ थोड़ा. सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. 10 से 12 ग्लास एटलीस्ट 10, हाँ पी सकते हैं. और रूम टेम्परेचर वाटर इज़ द वेरी गुड. एंड अवॉइड वेरी फ्रीक्वेंट थ्रोट क्लीनिंग. इफ़ यू आर डूइंग very frequently, then there will be a friction between the vocal cord and that may damage the voice in the vocal cord. Avoid smoking. Smoking may result into the vocal cord polyp and that required surgery, and after the surgery again you require the voice therapy. So it's better to avoid smoking. And if you have allergy from certain things, so avoid those allergens also. And avoid whispering. Mera naam Sanjay Kumar hai. If you speak like that, so there will be a lot of stress and the tension in the vocal cord, and that again is equivalent to a vocal abuse. So avoid whispering. बात whispering की है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी मुझे याद आ गई. बात कर्नाटका की एक पेशेंट की है. मेरा करियर का स्टार्टिंग पॉइंट था. अगर आप हमारे वीडियो जो यूट्यूब चैनल के ओल्डेस्ट वीडियो को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिलेगा 2010 का. एक पेशेंट आया था गदग से, एंड ही वॉज हैविंग वॉइस प्रॉब्लम. टेक्निकली वी कॉल्ड स्पास्मोडिक डिस्फोनिया. So when I was going through the history, how the problem started, he was telling, I had some throat infection. I went to meet an ENT doctor, and ENT doctor suggested some medicine, and he asked me to 1 month voice rest. And he misunderstood the instruction, and he was having आटा चक्की, गेहूँ पिसाने का उसके पास वो business था. So instead of means voice rest, what he did, he misunderstood the instruction. So started whispering. आपका नाम क्या, आप कैसे हैं? So and he did continuously for 1 month, and after 1 month there was only whispering. So for that treatment he met n number of ENT doctor, psychologist, psychiatrist. मतलब जितने प्रोफेशन होम्योपैथी आयुर्वेदिक इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, काला जादू क्या क्या सब होता है, मंदिर, सब जगह जाके भ्रमण करके फाइनली मेरे पास आया. तो जब मैंने डायग्नोस किया तो दैट वाज ए स्पास्मोडिक डिस्फोनिया. सो जस्ट यू कैन इमेजिन हाउ वोकल अब्यूज कैन स्पॉइल योर वॉइस. And after my therapy, he improved a little bit, but it was not very impressive results. So that's why you should, to keep your voice healthy, even you have the voice problem, even you are a professional user, or even you are a normal people. For everyone, we need the communication for a small job and day-to-day life. So apply those techniques. What I'm going to give, I'm giving now, like drink plenty of water, avoid whispering, avoid smoking, avoid allergens, and drink plenty of water. और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए. इफ़ यू डू सम जॉगिंग, वॉकिंग, व्हाटएवर फिजिकल एक्सरसाइज, योर स्टेमिना विल बी बेटर. सो दैट इम्पैक्ट विल बी ऑन योर वॉइस ऑल्सो. क्योंकि एनर्जी रहेगा तभी तो आप वोकल कॉर्ड के नीचे अच्छा खासा प्रेशर लगाएंगे, और जब प्रेशर होगा हवा का तभी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वोकल कॉर्ड का, और तभी तो लाउडनेस बढ़ेगा. तो जिस आदमी के पास एनर्जी नहीं होगा वो उसका वहाँ पे भी इम्पैक्ट दिखेगा. सो यू शुड हैव ए गुड स्टेमिना ऑल्सो. फॉर दैट यू शुड डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे वो जिस फॉर्म में हो, जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, योगा हो, जिम हो, कुछ ना कुछ करते रहिए. अपनी वॉइस अच्छी रखनी है तो. और अगर कोई भी वॉइस की समस्या, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ वॉइस प्रॉब्लम मोर देन 2 weeks, meet to a certified professional like otolaryngologist or laryngologist or a speech pathologist to discuss your problem. And so ये रहा जो हम वॉइस को हेल्दी रखने के लिए कुछ टिप्स दे रहे थे.
और अब हम फ्री हो गए हैं, तो अगर किसी के क्वेश्चंस होंगे जो इस लाइव में जुड़े हैं उसका आंसर मैं करने वाला हूं। तो मैं देख लेता हूं क्या सब क्वेश्चंस हैं, अगर जिसका आंसर मैंने इस लाइव में नहीं दिया है। मैं या तो यश boy, thanks for joining and watching us, and RJ20 Pooja Saini Kota, thanks for joining us and watching us, and मोहम्मद मोइनुल लिखते हैं एनी डाइट नीडेड। मेरी ओर से अच्छी वॉइस रखने के लिए ये है कि यू शुड अवॉइड वेरी स्पाइसी फूड, डोंट टेक वेरी कोल्ड और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स यू शुड अवॉइड, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। एंड सर वॉइस में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, तो अश्वनी कुमार लिखते हैं सर वॉइस में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, इसके लिए हम लोग स्पीच थेरेपी देते हैं स्टैमरिंग का, लेकिन आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी स्पीच को सुनेंगे, अब फिर उसके बाद हम कमेंट कर पाएंगे आपकी प्रॉब्लम और एक्सपेक्टेड आउटकम, और हम अपनी सर्विसेज के बारे में ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। तो आप लिखते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप ये है कि हमें कॉल कीजिए। फिर गगनदीप सिंह लिखते हैं सर मेरी वॉइस लड़की जैसी है, क्या करूं? तो गगनदीप सिंह आपने अपनी उम्र नहीं बताई है, अगर आपकी उम्र 10 साल की है, 11 साल की है तो चलता है, लेकिन अगर आपकी उम्र 13-14 साल से ऊपर की है और फिर भी लड़की जैसी आ रही है तो आपको हेल्प की ज़रूरत है हमारे जैसे लोगों के लिए। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ को हम सुने, परसेप्चुअल एवोल्यूशन करें, तो आप हमें कॉल कीजिए और फिर हम अगला स्टेप, हो सकता है कुछ टेस्ट भी सजेस्ट करें, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं, कई बार सुन के ही समझ में आ जाती है। अश्वनी कुमार कैन आई सेंड द वीडियो, हम लोग वीडियो पर कमेंट नहीं करते हैं, आप हमें कॉल कीजिए, डायरेक्ट परसेप्चुअल एवोल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ टेस्ट रिकमेंड करेंगे। अजय जोशी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वॉचिंग अस, एंड अरुण साइट थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग अस। टिकली पतली, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। हाय सर लिखते हैं, हाय। जैद खान लिखते हैं आई वांट ऑनलाइन वॉइस थेरेपी, ऑनलाइन थेरेपी, आई एम फ्रॉम यूपी। तो जैद खान जी हम चाहेंगे फर्स्ट यू शुड कॉल अस, विल डू परसेप्चुअल एवोल्यूशन, देन वी कैन डिसाइड यू कैन बी ए गुड कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन वॉइस थेरेपी। एंड नेक्स्ट इज अरुण विशे, thanks Arun for joining us and watching us. And next is ABD VK, I have phonatory gap, how many days it will take to cure? So phonatory gap may happen due to vocal abuse, phonatory gap may happen due to the vocal cord paralysis. So we need to understand your problem in more detail, so please call us, we will do perceptual evaluation, and if needed we'll suggest some tests also, and then we'll be able to comment how we can help and what you can expect from us. In fact, for phonatory gap we have one playlist also at our YouTube channel, so you can watch, that will give you some motivation and hope. उदय लिखते हैं, उदय सर for misarticulation problem is it possible to get online therapy? For misarticulation we don't provide online therapy at our center. The reason is that in misarticulation we need to teach the place of articulation and manner of articulation. So this online it has some limitations, so sorry for that. Maybe other clinicians are doing or not, I'm not sure, but we don't provide because there are certain sound, for example the Wheeler sound, so that I can't like क, अगर क हम बोल रहे हैं वो कहाँ कहीं दिखता है मेरा लिप्स टंग का मूवमेंट बाहर से, तो अगर किसी पेशेंट के क साउंड में प्रॉब्लम है या र में प्रॉब्लम है तो मैं कैसे दिखाऊंगा कहाँ पे टंग लगाना है, कैसे लगाना है। So I have some limitation for articulation correction. So we don't provide online speech therapy for this articulation pronunciation problem. So thank you all for joining us and watching us. Thank you all, love you all. अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अगले लाइव में स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच। एक बार उन लोगों से मिला देता हूँ फिर से जो लोग डिफरेंट जगहों से आए हैं वॉइस थेरेपी के लिए, स्पीच थेरेपी के लिए। एक बार उनकी तरफ मैं कैमरा टर्न करता हूँ, आप लोग हाय बोल सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पेशेंट्स हैं, तो एक्चुअल पेशेंट की संख्या तो इनसे काफ़ी ज़्यादा है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइव में, लेकिन वो सारे लोग कंफर्टेबल नहीं हैं वीडियो के लिए। तो जो भी लाइव हम करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं पेशेंट की परमिशन से करते हैं। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक
Thank you so much. And don't forget to watch the post-treatment live that we'll be doing after 8 days.